हे गाइस, तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ जोगो को। और इसको बनाने के लिए मैं एक ऐसा रेफरेंस इमेज चूज़ किया हूँ जिसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसको बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो इसकी बॉडी बनाने के लिए मैं ब्लॉक डायग्राम जैसा बनाऊँगा आउटलाइन, और इसको मैं लिमिनेस मेथड की वजह से बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो आप बोरिंग नहीं लगी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh*t. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तो हमारा आउटलाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसमें इंकिंग लास्ट में करूँगा। पहले तो मैं इसका फेस ड्रॉ करूँगा, वो भी पेंसिल कलर से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला। वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तो इसमें जो फायर बग टाइप सा बन रहा था, तो उसकी आप जानते हो उसका डोमेन एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा रेयर लगता है। और अभी 16 एपिसोड में बहुत ज़्यादा इसने मतलब टक्कर दी थी शकुना को, एकदम हाईएस्ट लेवल की। तो अब वापस इसका गाइस, इस एपिसोड के पहले मुझको लगता था मतलब ये एक फालतू कैरेक्टर, लेकिन पहली बार मैंने इसका डोमेन एक्सपेंशन और इसकी सारी कर्स एनर्जी देखी। भाई बंदे ने मतलब तबाही मचा दी थी पूरी, कतई जहर बचा भाई, गजब यार। और उसने पूरा मीटियोरॉड बना के भाई लावा शकुना के ऊपर फेंक, लेकिन शकुना ने लास्ट में उसको जला दिया था। तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि इसने भाई 16 एपिसोड में यही मतलब मेन इसने टक्कर दी थी शकुना को। शकुना आप जानते हो किंग ऑफ कर दें, तो उसके आगे टिक वैसे भी नहीं पाए, काफ़ी सी बात है। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अब भाई मैं आउट ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो अब मैंने इसको पूरा इरेज कर लिया क्योंकि इरेज करने से फिर बाद में आप जब अपनी पेंसिल कलर से आप ड्रॉ करोगे या कलरिंग करोगे तो वो स्मज नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको आगे आप देखते जाओ। तो मैं वापस म्यूज़िक ऑन कर देता हूँ।
गाइस मुझे इसका कलर बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और फिल्म्स तो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही। और गाइस आप देख सकते हो बिना मतलब उसमें कलर किए उसके वैल्केनो में एकदम अभी से लगने लगा कि ऊपर आग लगी हुई है, लेकिन नहीं, अभी हमको उसमें और कलर करना है एंड हम लोग को इसमें और टेक्सचर देते जाना है कलर करने के बाद भी। तो मैंने नीचे उसके शूज़ में ब्राउन कलर करके उसके ऊपर ब्लैक कलर का यूज़ किया हूँ और इसके बाद मैं कलरिंग के बाद मैं इंकिंग कर रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहना और मैं ऐसे ही हर जगह अप्लाई करते जाऊंगा। तो अब मुझे बस इसकी फ्लेम्स बनानी है एंड हमको उसका वॉल्केनो, देखो मैं इसको मैं येलो कलर करूँगा, देन मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ करके इसको मैं इंक से कर दूंगा। देखो गाइस इतना हो गया है। अब मैं पूरा बैकग्राउंड का फ्लेम सब मतलब मीडियो रॉड्स वो मतलब उसकी डोमेनी एक्सपेंशन ऐसा है और कर्स पावर उसकी जो था, तो मैं उसी को मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, वही वाला पोज है ये। तो इसका रेफरेंस इमेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको भी बनाना है। अगर आपको भी ऐसे ड्राइंग वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलो बिना बकवास करते हुए वीडियो को वापस फास्ट फॉरवर्ड करें ताकि आपको बोर ना लगे। तो हमारा ड्राइंग पूरा बनके तैयार हो चुका है। तो अब जाके आप देखो ये वाली वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपना फेवरेट कैरेक्टर बता देना, क्योंकि मैं आपका फेवरेट कैरेक्टर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तब जाके वाली वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ तुमसे वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।